क्या टिकट साइज होता था उस टाइम पे, कितना चार्ज करते थे आप? So initially I used to charge very low. I mean I have worked for $30 also, I worked for $100 also. और अभी आपकी जो कंपनी है वो $1 मिलियन की वैल्यूएशन पे आ गई है, तो अभी आपने हाईएस्ट कितना एक क्लाइंट से चार्ज किया है? It's $25,500. So $25,500 is the maximum that I've charged a client. क्या सर्विसेज प्रोवाइड की थी आपने? Only had some tips and tricks जो मुझे खुद को पता कि कैसे रीच आउट करना है ब्रांड्स को. वो क्या सीक्रेट्स होते? रॉबर्ट क्यूसाकी, फाइनेंस विद सरन, उनको कैसे रीच आउट किया? So if you're someone who is new, who is starting out, then I wouldn't recommend ads. I mean, you don't have to spend a lot of money. I mean, we at that time used to spend like $1 a day for our clients also. $1, $2. With that, we used to get good reach. We used to boost it worldwide. स्टार्टिंग में तो किसी के पास टेस्टिमोनियल भी नहीं होंगे या फिर कंटेंट वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपके हिसाब से फर्स्ट क्लाइंट को कैसे क्रैक करेंगे अपन? हाय एवरीवन, वेलकम टू एबीएस विशाल मीडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है एबीएस विशाल और मैं पिछले 5 साल से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं एक सीरीज रन कर रहा हूँ जिसके अंदर टॉप फ्रीलांसर अपने सीक्रेट और हैक्स को शेयर कर रहे हैं। आज हम पीआर एजेंसी को डिकोड करेंगे कि बिजनेस कैसे काम करता है, यूएस क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो हाय साहिल, वेलकम टू पॉडकास्ट। Hi Vishal, thank you so much for having me. I'm really excited to be here. कि जो पीआर एजेंसी है उसका नाम लेवल अप पीआर। सो बेसिकली क्या काम करती है? So Vishal, what we do is we help our clients. Mostly we work with top 1% entrepreneurs like founders, CEOs, realtors, or plastic surgeons, lawyers, anyone who wants to build their personal brand. So what we do is we help them get featured in top tier media outlets. You must have heard of Forbes, USA Today, New York Times, Wall Street Journal. आपने स्टार्टिंग मतलब फ्रीलांसिंग से की थी या ओपन की थी एजेंसी? So पहले तो it was just me. I started it all alone only. So I was the only person who started this. Because back then I was a singer, so music मैंने छोड़ा around 2020 COVID के दौरान. तो COVID हुआ था and then I lost all my gigs. Everything was cancelled. Okay, मैं अपना म्यूजिक कर रहा हूँ. I can maybe म्यूजिक में जो मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो मैं शोज कर रहा हूँ, जो मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ. So I can also help other musicians with this. तो मैंने अपनी एक म्यूजिशियंस एजेंसी स्टार्ट की in 2020 COVID के टाइम in जून. तो उस एजेंसी में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू हेल्प अदर म्यूजिशियंस, अदर सिंगर्स with building their social media presence, with how to post content on Instagram, how to boost ads, or how to get featured in the media, how to get gigs from bars or colleges, कैसे pitch करना है, all of that. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और धीरे धीरे we started, and then I hired my first employee who was a VA, so he used to help me with all of the administrative work or pitching the clients, reaching out to them. ये किस टाइम की बात थी, मतलब किस ईयर की बात थी? This we are talking about 2020, around June. So June is when I started and I got my first client in a couple of months. So मैंने बहुत pitch किया. It took me around a couple months to get the first client. और उसके बाद धीरे धीरे like we started getting more clients क्योंकि उस time COVID था and everything was moving online. So I can say the timing was really good for me because everybody they wanted to build their online presence. So सबको उस time एक online presence की जरूरत थी. They wanted to have credibility and trust online क्योंकि सब कुछ online move हो रहा था, right? तो उस time demand बहुत ज़्यादा थी and then I would say even new people like me who were new in the industry, जो PR में new था और marketing में new, I even got some business in the beginning. So timing was good for me, I would say. So I was lucky in that specific aspect. पीआर करते थे म्यूजिशियंस का, ऑर्गेनिक बूस्ट लेके आते थे या फिर पेड करते थे, एड चला के और वो सब? We used to do both of it. क्या टिकट साइज होता था उस टाइम पे, कितना चार्ज करते थे आप? So initially I used to charge very low. I mean I have worked for $30 also, I worked for $100 also. Okay. So initially I started with these numbers only, $100, $200. That's what I used to charge in the beginning. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से $100 चार्ज करते थे, उसके अंदर आप ऑर्गेनिक भी करते थे, पेड भी करते थे, एड चला के और सोशल मीडिया दोनों, क्या क्या काम होता था उसमें? So उस time I used to help with shows also. तो मतलब around $200 से $300 तक का I used to create something जिसमें we used to help them with posting also regularly, and then posting, of course, the other ones who used to pay for the ads. So we used to post it from their ads manager only. So ads cost was covered by them. And then I had some tips and tricks जो मुझे खुद को पता थे as a musician कि कैसे reach out करना है brands को, कैसे reach out करना है cafes को. So I used to give all of them, and the other ones who used to execute it. So I used to do a little bit of coaching also back then.
तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता था कैसे करना है, एंड देन आई यूज्ड टू बी इन कांस्टेंट टच विद देम. तो वो क्या सीक्रेट्स होते थे? See, there are no secrets. I think it's all about, you know, like doing actively things which work. तो कुछ नहीं है, I mean, you know, being active with your social media presence, that's a good thing. उसके बाद जो मैंने उनका another thing जो improve की was their numbers. Because क्या होता है कि these numbers, you know, like people really get affected. I mean, let's say अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रही हो ना, तो अगर 2 रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपको एक भरा हुआ दिख रहा है और एक दूसरे वाला खाली है, हो सकता है वो खाली जो है उसका भी प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है. लेकिन यूजुअली हम क्या होता है, यू नो, वी पीपल, वी ह्यूमंस, हम नंबर्स को देख के थोड़ा, यू नो, वी डिसाइड कि हाँ ये अच्छा होगा, तो वो उसकी तरफ जाते थे. तो हमारा एक ये भी गोल था कि हम जो म्यूजिशियंस का काम कर रहे हैं उनके नंबर्स इंप्रूव करें, मे बी थ्रू एड्स, ठीक है. सो हम उनको एड्स के थ्रू थोड़ा नंबर का मतलब उनके फॉलोअर्स या फिर उनकी जो व्यू काउंट है फॉलोअर्स पे काम करते थे, उनके लाइक्स पे, व्यूज पे, तो हम उनको बूस्ट करके उनका ग्रो करते थे, ताकि अगर वो किसी ब्रांड को पिच कर रहे हैं और इफ दे आर पिचिंग लेट्स से अ कैफे, जैसे अ बार पोर्टल फॉर से द या शो, फिर किसी से भी फॉलोअर्स इंक्रीज कर लेते, वो मेथड होता था या फिर अपन एड चलाकर एड्स करते हैं. वी यूज्ड टू डू इट थ्रू एड्स के थ्रू, राइट. ओके. और जैसे मैंने देखा है कि जब अपन एड रन करते हैं किसी भी इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, तो वो अपनी रीच को डाउन कर देता है, ऑर्गेनिक बूस्ट नहीं देता, फिर वो पेड से ही करना पड़ता है पूरा. Yes, that happens. So if you are someone who is new, you know, who is starting out, then I wouldn't recommend ads. But let's say if you build some foundation, you already have it, then running ads, I think it just goes. I mean, you don't have to spend a lot of money. Like you can, I mean, we at that time used to spend like $1 a day for our clients also. $1, $2. Okay. With that, you know, we used to get good reach. तो ऐसा नहीं था कि, you know, we also used to do like a mix of it. So it was not just international audience that we were catering to. So we used to boost it worldwide, sometimes in cheaper countries, to get more impressions as well. Okay? Because that music, you know, English music is of course heard worldwide. So we used to boost it all over the world. So that also used to help with better numbers at a very cheap cost. इनबाउंड लीड्स आती थी या फिर आउटबाउंड आप एड चलाते थे, या क्या मेथड यूज करते थे? Starting में तो it was all outbound, and till date it is a lot of outbound. I mean, mostly it is outbound. Okay. Inbound only happens when you are, you know, like a big enough person, you are credible. Now we have started to get inbound. Now we are running ads to get inbound. But back then everything was outbound. I mean, I have got so many business out through outbound only. So I used to reach out to people. तो मैं उनको Instagram पर message डालता था, like a customized message कि, you know, this is what I do, or if something I liked about their content, तो मैं उनको थोड़ा study करके what they are doing great, maybe giving them an advice or complimenting उनको किसी चीज पर. अगर कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को उनकी प्रोफाइल में, I would make a good, you know, comment around it. ठीक है. So customized message create करके मैं उनको send करता था, and then just to strike a conversation with them. My goal was not to sell them at the first thing, but just to get their first response. एक बार response आ गया, then getting to know them better, what they are doing, maybe कि वो अपना social media grow करने के लिए क्या कर रहे हैं. If, you know, if they need any help, I would just use to, you know, give them advice. And then my goal was to maybe get them on a call. तो एक बार कॉल पर आगे, देन उनको एक्सप्लेन करना कि हम क्या करते हैं, गेटिंग टू नो देम, एंड देन प्रोवाइडिंग देम द सॉल्यूशन, एंड इफ इट्स अ फिट, वी यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. तो थ्रू इंस्टाग्राम डीएम्स आई गॉट अ लॉट ऑफ बिग क्लाइंट्स. फेसबुक पर हम करते हैं डीएम्स, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू. लिंक्डइन पर हम करते हैं आउटरीच. So we used to do a lot of outbound, and we still do it. And जैसे स्टार्टिंग में तो किसी के पास टेस्टिमोनियल भी नहीं होंगे या फिर कंटेंट वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपके हिसाब से फर्स्ट क्लाइंट को कैसे क्रैक करेंगे अपन? ठीक है. फर्स्ट क्लाइंट आई थिंक शुड कम फ्रॉम मे बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, और द नेटवर्क दैट यू ऑलरेडी हैव. ठीक है. एंड इट कैन ऑल्सो कम एज फ्री. आई हैव डन लॉट ऑफ बिजनेस फ्री इन द बिगिनिंग ऑल्सो, और कोलैबोरेशंस. ठीक है. सो यू कोलैबोरेट विद अदर पीपल. So you reach out to them, and then you collaborate. This is what you can offer them, and this is what you need from them. So maybe you can do a barter. Let's say I just need a testimonial if you found my great bill. So you work for free, and then you get a video testimonial from them, a written testimonial. ठीक है. Or you ask them for a referral. कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, then you get a referral, and then you build your portfolio until you have, you know, the time bandwidth. तो शुरू में अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े, which I have done, you should go for it. क्योंकि उसमें आपको एक तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. The client is teaching you. You are also, you know, teaching by doing practically everything.
तो आपको सीखने को मिल रहा है, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, so that is going to help you with cracking deals. ठीक है, and then जब आपका bandwidth खत्म हो जाए, like let's say you have a lot of now free or barter collaborations, उसके बाद you start charging. Let's say you can only work with 5 clients. ठीक है, once your 5 clients bandwidth is finished, then you can start charging. Maybe you can let them know, okay, I can't do this for free now. This is what it's gonna charge. ठीक है, अगर उनको आपको काम अच्छा लग रहा होगा, they would be willing to pay you. ठीक है, so that's how it works. I have worked with so many people for free and I still do it as well if I find a value. For example, I have worked with Robert Kiyosaki, which was one of the collaborations that we had. ठीक है, so there were some things that they really helped me with. There were some great collaborations. So what I got from them and what I did for them. So it was a collaboration. So if there's value in collaboration, like go for it. It's only going to help you. So starting में आप वैसे करके like get started, and then you can use it as a leverage to close other clients. आपने जैसे बताया कि आपने रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंस विद सरन, उनके साथ में भी कोलैबोरेट किया है, तो उनको कैसे रीच आउट किया आपने? ठीक है, so now you were talking about inbound and outbound, right? तो अब मेरा जब पर्सनल ब्रांड बन गया था, I have been consistently posting for 6 years now. So this actually happened that the producers of Growth Summit, जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंस विद शरण और बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाया था ग्रोथ समिट पर, ठीक है, सो these guys, the producers of Growth Summit reached out to me on LinkedIn. तो उन्होंने आई थिंक कुछ सर्च किया होगा LinkedIn पर कि पॉडकास्ट एक्सपर्ट, PR एक्सपर्ट, समथिंग लाइक दैट, एंड दे जस्ट फाउंड आउट माय नेम ऑन द टॉप. तो देन दे रीच्ड आउट टू मी एंड देन दे हैड अ कन्वर्सेशन कि उनको PR चाहिए इस इवेंट के बारे में, दे वांट टू गेट फीचर्ड हियर एंड देयर, तो हमारी वहां से बात हुई, एंड देन दैट्स हाउ वी कोलैबोरेटेड. So that's how it worked. So it was an inbound opportunity for me. So inbound only works when you have a good personal brand. So people will start coming to you. आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में DM करते थे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो 2020 में तो शायद रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप 10 मैसेज भेज सकते हो या 20, कुछ ऐसा, आप अनलिमिटेड भेज सकते थे. अभी के टाइम पे तो रेस्ट्रिक्शन आ गए, 10-12 के बाद में वो फिर वो शो नहीं होते वहाँ पे, में भी शो नहीं होता. तो अभी क्या स्ट्रेटेजी आप लगाते हो और उस टाइम पे कैसा था? So now we have multiple accounts. उस टाइम पर I think we used to do like let's say 50 DMs per account. तो we used to have multiple accounts. जैसे कंपनी का अकाउंट हो गया, then my main account, then I had another account for myself like a private one. ठीक है, और our employees used to have their own account. ठीक है, तो ऐसे multiple accounts हैं हमारे पास हर प्लेटफॉर्म पर. LinkedIn पर भी have multiple accounts. ठीक है, so every account has a limit. ठीक है, so when you have a limit, what you can do is that you focus more on quality. So जितना आप अच्छा मैसेज क्रिएट करोगे, let's say if you are reading the profile or if they see that this message is specifically written for them, कि ये मैसेज उन्हीं के लिए बना है और वो मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, then there are more chances कि वो आपको रिप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आप जितना कस्टम मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, जितना उनकी प्रोफाइल को देख के कर सकते हैं, ट्राई टू पुट इन दैट एफर्ट एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट. तो maximize your limits. Maybe you can do like, I think अभी भी आप कर सकते हैं, I think you can easily do like 40 messages each account. तो I think that's enough for a person. अगर आप 100 से 200 DMs एक दिन में कर रहे हैं, and if you have a good personal brand, chances are that out of 100 at least 3 to 4 people will respond to you. And then if you get, let's say 20 or 15 to 20 responses, in a week, you can book out close to like 2 or 3 calls a month, 2 or 3 calls a week. ठीक है, and that comes out to like 10 calls a month. And उसमें से अगर आप 1 या 2 भी क्लोज कर लेते हो, let's say at a good price point, you will start making some good money. आपके हिसाब से किस तरीके से DM को अपन कस्टमाइज करें? एक तो वे भी फर्स्ट ऑफ ऑल I'll give you like 3-4 elements. तो एक तो उनका नाम उनका 100% उस DM में होना चाहिए, like on the top. ठीक है, then you can customize the specific message कि अगर let's say वो एक रियल्टर हैं या फिर एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो अभी you can create message around I help doctors, like create viral videos, create content. ठीक है, तो वो आप एक लाइन डाल सकते हैं. then another line could be something around जो आपके उनके कंटेंट से पिक की, तो आपने उनका थोड़ा सा कंटेंट स्टडी किया कि let's say they have been to an event recently और वहाँ पर वो कुछ great उन्होंने कुछ speech दी, so you pick some line from it and then you add it, something that you really liked from your profile. So anything specific that shows them that you
took in some time to study their profile or look at it. तो एक line custom वहाँ पर आप डाल सकते हो. Then you can add specific, अगर आपके पास कोई specific case study है which is from the similar field that you work with, तो आप वो भी उसमें add कर सकते हो. I have recently worked with @, like someone they can look at, तो वो आप add कर सकते हो उसमें. And then last में you can just add a call to action. Call to action would be just very easy, I would say. Something like interested to learn more or open for a quick chat. It shouldn't be like, is this would you like to book a call, or, would you like to try out this service? It shouldn't be like such a big one. Your just only goal with the first message should be that they respond to you. So जितनी कम से कम restriction होगी ना, उतना chances ज़्यादा है कि वो आपको reply करेंगे. So ये basic elements होते हैं. If you take care of it, like people will respond to you. उसके अलावा आप थोड़े से उनकी post like कर दो. You can like 3 to 4 posts. Engage with some posts as well. Leave a meaningful comment. जो आपको कुछ अच्छा लगा वो आप comment में leave कर दो. People really love that as well. And then sometimes like they do not know that request message is a message है. So उसके साथ साथ एक वो भी message डाल सकते हो that you have sent them a DM. Hey, I just sent you a DM. ठीक है, तो you can leave comment around it. So maybe leave some likes, add a couple of comments, then customize a message. All of these things are really going to help you. So with this strategy, I think you can expect close to 4 to 5% reply rate. ठीक है, and then you also need to see आप कैसे लोगों को reach out कर रहे हो. Let's say if you are someone who is starting out, जिसको 1-2 साल का experience है, and if you reach out to top celebrities, who are influencers, big people, big business owners, chances आपको कम reply आएंगे. तो आप देखो आप कौन से लेवल पर हो, एंड देन यू रीच आउट टू पीपल अकॉर्डिंगली. इफ यू आर अ फ्रीलांसर हु इज स्टार्टिंग आउट, देन यू रीच आउट टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिनकी छोटी टीम है. ठीक है, तो शुरू में यूज्ड टू वर्क विद स्मॉल बिजनेस ओनर्स. जैसे जैसे मेरा पर्सनल ब्रांड बड़ा हुआ, हमारी एजेंसी बड़ी हुई, बड़ा ऑफिस आया, बहुत सारे पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के आए, तो हमने बड़े बड़े क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट किया. तो उनसे भी हमें अब रिप्लाई आते हैं. नाउ पीपल विद 2 million फॉलोअर्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू मी ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, पहले नहीं करते थे. व्हेन आई डिड नॉट हैव अ पर्सनल ब्रांड, आई वाज वर्किंग विद पीपल विद लेस फॉलोअर्स आल्सो, स्मॉलर टीम्स आल्सो, लाइक स्मॉलर, जिनकी रेवेन्यू स्मॉल है. तो आपको देखना है कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस हु आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू यू. तो धीरे धीरे इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, और अभी आपकी जो कंपनी है वो $1 million की वैल्यूएशन पे आ गई है. तो अभी आपने हाईएस्ट कितना एक क्लाइंट से चार्ज किया है? So it's not just a valuation. So there are multiple things that contribute to that $1 million thing: the revenues, the assets that the company has, the revenue, multiple, the clients that we are serving. So multiple things are involved for that number. First of all, to be more precise. Now coming to the maximum that I've charged the client, I think maybe it's $25,500. So $25,500 is the maximum that I've charged the client, and this falls for like. हाँ, क्या सर्विसेज प्रोवाइड की थी आपने? PR only. So I have been doing PR for 4 years now, and I focus on word service only. So I don't do a lot of different things. Now we are starting to add more. That now we have perfected the PR thing. It's more productized. So we offered them like a 6 months PR campaign. Our goal was to get them in multiple, podcast placements, get them top tier coverages in the media, and then help them become an author also on multiple platforms. So it involved multiple strategies revolved around PR only to build their personal brand. So that was my service for 6 months of PR campaign, all paid upfront. ओके, सो अभी जैसे कोई PR एजेंसी स्टार्ट करे तो उसमें प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी या कैसे रखते हैं? प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी? I think it's very subjective कि आप क्या चीज उसमें ऑफर कर रहे हैं, सो और कौन सी ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं, एंड क्या डिलीवरेबल्स हैं. ठीक है, आई मीन फॉर different services we have different prices. So our pricing usually starts around $1,000. It goes up to $10,000 as well. So it all depends upon the level of exposure that you're providing them. ठीक है, what are the KPIs कि आप उनको कितने media success दे रहे हैं per month. ठीक है, so it can be divided on that. So if someone is just starting out, I mean, initially, as I said, we used to work for $100 also, $500 also. So there's no such specific price point that I can say is, like the fixed number.
like उस same service का जो मैं करता हूँ, you know, like with a little bit difference or with a more customized. Like there are agencies who are charging $4,000 also for what I charge $1,000, and maybe for what I'm charging $1,000, there are other people who would do that for $500 also. Okay, so but there's that little difference, you know, that just adds on and that gives more value. So it's very subjective. So like you can first of all focus on building your clientele, and then slowly you can change your prices, you know, as you get more clients and as you add more value to your product. So you can always keep revising the price. So maybe you can start small, and then once you have more clients you can increase it. Okay, so maybe just double it after a year once you have more clients. फिर PR के अंदर अपन अपसेल क्या करते हैं और सर्विस? Upsell में so our PR is more of a retainer model. ठीक है, तो usually हमारे पास different tiers के packages हैं, you can say. So we provide a lot of different services, like digital press है जिसमें clients को हम digitally press में feature करते हैं, like the articles. उसके अलावा हम podcast placements करते हैं which are focused primarily on getting on podcasts. Then we have something for getting them in speaking engagements as well. ठीक है, then हमारे पास print magazines हैं if someone wants to be on print magazines. उसके अलावा sometimes we also make their, you know, LinkedIn presence. तो अगर किसी को LinkedIn पर grow करना है, they want to build a brand on that, we have a social media managing service for that also. ठीक है, so there are a lot of different services, price point at different also. Sometimes we work with clients on a project by project basis कि किसी को अगर एक चीज चाहिए तो हम उसी पे focus करते हैं. And sometimes we also create a combination of this, like a 6-month strategy, किसी में 12-month strategy कि these are ongoing things. Then let's say कि इस month में आपको podcast कर दिया, 3 months में एक speaking engagement, or every month digital press. So every client is different, you know, based on the clients. We do one-offs also, like a project-based things, and we create a longer-term strategy also. Our initial goal is to pitch them like the bigger term only, like showing them the big picture, 12-month vision. तो जितना बड़ा हो पाए हम उतना दिखाते हैं. But then if the client has some restrictions or if they are not open into it, then we would just customize it according to that. तो ऐसे वर्क करता है. But initially तो हम like our goal is to show them the bigger picture only and show them what's the biggest possible and how we're going to, you know, transform them like their online presence entirely in 12 months. So that's what we initially do. और आपके हिसाब से जैसे आपने बताया कि प्रिंट मीडिया में भी करते हैं आप, डिजिटल मीडिया में भी, इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ वर्क ज़्यादा करती है, मतलब कि क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने में क्या हेल्प ज़्यादा करता है? पॉडकास्ट करता है, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया? Digital press is the biggest out of all that we do. ठीक है, print media is very less because आजकल print like hardly any people read print. ठीक है, so mostly हमारा digital press पर ही focus रहता है. तो why digital press is the top one out of these is because people are looking you up on Google. ठीक है, so whenever they are searching for any keywords that are related to your industry, or let's say if they're looking about your business name, your own founder's name, so they would see all of these, you know, press outlets when they search on Google. तो उससे आपको बहुत credibility मिलती है. ठीक है, that will tell the consumer. इसमें जैसे आप गूगल पे आप लिस्टिंग करवाते हो तो उसमें एक ब्लॉग होता है या फिर अपन ऐसे भी लिस्ट करवा सकते हैं कि टॉप 10 डेंटिस्ट, उसके अंदर भी आ सकता है या फिर सिर्फ ब्लॉग होगा? Anything, we do all of that. So हम different story angles करते हैं. कभी हम founder story कर ली. Sometimes let's say we do a story about their business, or it can be something that is trending inside their industry. It could be an authored piece, like an opinion article ki what is their opinion on this specific topic. They are just mentioned inside the article. We also do all of that. Top companies to work with, you know, top brands to work with, top dentists, top plastic surgeons. We do that listicles as well. So it's a combination. Every single month for our clients, we come up with new angles and then we get them placed. और मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने एक चीज़ भी देखी थी कि जब आप आपके पर्सनल ब्रांड बन जाती है तो आपकी जो एड की कॉस्ट है ना वो धीरे धीरे कम आने लगती है. 100%. This is, you know, what we teach all of our clients, that when you have PR in place, I mean, a lot of clients, you know, like want quick things, you know, they want the ROI very quickly. That's not something that happens very quickly in PR. Again, PR is more of an ongoing thing. It's like more of a
long term marathon, not a sprint. तो धीरे धीरे your ad cost per impression will also go down because now people recognize about you. ठीक है, and people when they see your ad, ad तो कोई भी run कर सकता है. You can pay money to Facebook and then you can spend. But if you are a brand and when, let's say, Vishal, I saw your ad and then I looked at your social media, I looked you up on Google. वहाँ पर अगर मुझे कुछ नहीं दिखेगा, like good reviews, third party credibility, then there is very less chance that I'm going to engage with your ad or even buy your product through the ad. But if you have PR, you are talking good, you are being featured in the media, you are on podcast, so that will give me more, like courage, more, you can say, trust to. So that's how the PR is so powerful. Like top talent also wants to work with you. Investors are more likely to invest in your business. You can charge a premium pricing for whatever service that you have because now you're a brand. Okay. और जैसे अभी आपकी टीम में मेंबर क्या क्या काम करते हैं, कितने मेंबर हैं? Close to 15 to 20 members as of now. So starting from, let's say we have a sales team where we have different members like a LinkedIn expert whose entire goal is to generate leads on LinkedIn by networking on LinkedIn. Then people who do Instagram outreach from different accounts that we have. Then networking on Facebook groups, that could be one. Then someone who is handling the ads that we run, taking care of the leads, creating new ad copies, new creatives, or what other methods. We also use email marketing, so we do a lot of cold outreach through email marketing, right? So this is like all about marketing team, and then sales team who takes care of these leads, does some like discovery and see if they're a good fit, and then I am the final closer of the company, so I do all of that closing. Then we have project managers who take care of our clients, account managers जो consistently उनके साथ communication करते हैं. फिर PR strategists हैं जो उनकी strategy देखते हैं, क्या angles होंगे story के. Content writers हैं जो एक story को storytelling way में create करते हैं clients को interview करके. फिर graphic designer है, video editor है जो video edit करते हैं, all the short form videos that I post or our clients post. Then we have an HR who takes care of the team, जो culture को बना कर रखते हैं. We create a lot of funny content, memes content, culture based. We have fun Fridays at our office, so we create content around that ताकि we can attract top tier talent. ठीक है, so we have a very friendly environment. We have a very warm environment at our company. So our HR makes sure that more people see it, and when people see it, we get a lot of applications of people who want to work with us. तो ये different team हमारे members हैं, and all of those are the ones who have contributed to our success. ओके, थैंक यू साहिल. आपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छे इंसाइट शेयर करे, लोगों को पक्का बेनिफिट मिलेगा इनसे. थैंक यू. Thank you, Vishal. Thank you so much for inviting me. And even after listening to this podcast, if audience or anyone has any insights, or you or the audience, feel free to DM me, and happy to answer any follow-up questions that you guys might have. So all the best to you, Okay. and let's stay in touch.